बिकॉज यू हैव अक्टूबर, एंटायर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जैन फर्स्ट वीक में तुम्हारा जेई हो जाएगा। एंड सेकंड, दिस इज द फाइनल टाइम, ये मान के चलो, बिकॉज सेकंड अटेम्प्ट के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है। सो वो 20x लिखा फिर 2ax है। 28। ओके। हम्म। रिसेंट एमसीक्यू है 2023 का। अब क्वेश्चन इजी आते हैं बट कैलकुलेशन लंबी होती है। वो सिलेबस कम हो गया ना अब। सो क्वेश्चंस आर लेंथी। 5 मिनट लग जाते हैं इसीलिए। नहीं होंगे मिस। तुम्हें क्या करना होता है, एप्टीट्यूड तुम फिनिश कर लोगे 30 to 40 मिनट्स में। उसके बाद मैथ्स पे आओगे। मैथ्स को तुम्हें मिनिमम 90 मिनट्स देना है। मिनिमम 90 मिनट्स लगाओगे मैथ्स में, तब जाके कम करीब 15 क्वेश्चन तुम कर पाओगे। यस, दिस इज स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर तुम जल्दबाजी करोगे यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन मैथ्स। लंबे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन आ देयर। एप्टीट्यूड सबसे पहले। हम्म। सो रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम, देखो क्या करना है इसमें। फिर
with y square equal to 2x. सोचो क्या करना है इसमें. कैलकुलेशन ज्यादा है, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन. This is a recent 2023 question. This is a parabola. इसका फोकस आर दिया हुआ है. You can compare this with y square equal to 4x. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4a is equal to 20. A would be 5. So r is 5 comma 0. Then you have a line y is equal to mx plus c. C को if you want you can remove c. Get rid of c. एक वेरिएबल हटा दो. Unnecessary उन्होंने लंबा कर दिया इसको. So I removed c from here. This is intersecting at 2 points, P and Q. Then you have this triangle जिसका सेंट्रोइड हमें दे रखा है. एम एक्स प्लस सी लाइन थी ना, सी को मैंने रिप्लेस कर दिया. सेंट्रोइड इज 10, 10. तो वी बेसिकली नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द लाइन. बट सेंट्रोइड भी गिवन है. Centroid given है, that means I can take this point as x1 y1, this point as x2 y2. Try करो. You can apply the formula for centroid. You can find c m की value. करो try. You can also form a quadratic, and that quadratic will be having roots x1 x2 if it's in terms of x. That quadratic will have root in terms of y if it's in terms of y, y1 y2. 2023. Focus of a parabola is always a comma 0. स्टैंडर्ड पैराबोला है ना कोर्स में, अब उसका फोकस होता है हमेशा a कॉमा 0. ए हमने निकाल लिया, कंपेयर कर लिया. सो व्हेन यू कंपेयर वी कैन फाइंड a. So if you use the centroid वाला formula, x1 plus x2 plus 5 divided by 3 equal to the x coordinate of the centroid. Similarly, y1 plus y2 plus 0 divided by 3 is equal to the y coordinate. No, 10. So using this, I get x1 plus x2 is equal to 25, y1 plus y2 equal to 30. Also, you can solve this parabola and the line. If I substitute x, I'll get a quadratic in y. So y square equal to 20x. What is x? The line is y is equal to mx plus 6 plus m. So I can replace x, y minus 6 minus m divided by m is equal to x. So you find x from the line, substitute in the parabola. You get a quadratic. लाइन का x पैराबोला में सब्स्टिट्यूट किया. So my square is equal to 20y minus 120 minus
20 m, सी इज इट करेक्ट? पैराबोला और लाइन को मैंने सॉल्व किया. फ्रॉम द लाइन आई फाइंड एक्स, substitute in the parabola. So this is a quadratic in y which has two roots, m square minus 20y plus 120 plus 20m. इसके दो रूट है. सम ऑफ रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक में? इन ए क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट इज ऑलवेज माइनस बी बाई ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए. I'm using sum of roots and product of roof in quadratic. The sum of roots. This quadratic has two roots, y1 y2. उनका sum हो जाएगा 20/m. But y1 y2 तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना? y1 प्लस y2 की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है. कितनी है? 30. तो 30 इज इक्वल टू 20/m. लो कर लो बात. m की वैल्यू आ गई. m इज 2/3. This m you can substitute here. You get the value of y1 into y2. करो. Substitute m and get y1 into y2. कितना आ रहा है y1 y2? किसने किया? 200. 200. इट इज 120 प्लस 20/2/3 है ना? तो 40/3 एंड दिस इज 2/3. 360 प्लस 40 400/2 200 राइट. सो y1 y2 इज, एक बार इसको इतना देखो. एनी डाउट आस्क मी. अब लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. हमें चाहिए क्या? वी वांट पी क्यू होल स्क्वायर. व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. का उसका होल स्क्वायर क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू. इसमें हमें ऑलरेडी y1 प्लस y2 पता है ना? तो वी आई नो y1 y2, आई नो y1 प्लस y2. आई कैन इजीली फाइंड व्हाट इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी. y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज y2 प्लस y1 होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2. तो एक टर्म तो हमारी यहाँ से आ जाएगी. आई नो y1 y2, आई नो y1 प्लस y2. इसको यूज करके यू कैन फाइंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. Sir, instead of this, like we already know कि y1 plus y2 30 और y1 y2 200 है, तो वो splitting करके नहीं 20 into 10 and 20 plus. वैसे कर लो वैसे, बट आई वुड प्रिफर दिस. वैसे भी कर सकते हो. तो y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक बना के ना यूजिंग? 30 का स्क्वायर हो गया Yes. 900, ये हो गया 800, 100 आ गया. ये भी इजी था. मतलब यू वांट टू फाइंड आउट द रूट्स. y1 y2 निकालना चाह रहे हो ना तुम? हाँ ठीक है. x2 माइनस x1 के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों पॉइंट्स पैराबोला पे लाई कर रहे हैं. इसको मैं हटा रहा हूँ. अब बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला. तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 20x1, y2 स्क्वायर इक्वल टू 20x2. तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कॉमन x1 माइनस x2. यहाँ से यू कैन फाइंड x2 माइनस x1, x1 माइनस x2. x1 y1 वुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ये भी करेगा. दोनों को माइनस कर दिया. ये हम फाइंड कर सकते हैं इजीली. y1 प्लस y2, y1 माइनस y2 बाई 20. यहाँ से x1 माइनस x2 आ जाएगा. उसका स्क्वायर कर लेंगे फिर. y1 प्लस y2 ऑलरेडी मेरे पास 30 है. y1 माइनस y2 तुमने निकाल लिया है. कितना था? 10. तो you get x1 माइनस x2. तो ये गेट x1 माइनस x2. 10 - 10 = 60. 60 - 10 = 120. 120 - 120 = 180. 180 - 180 = 200. 200 - 200 = 400. 400 - 400 = 800. 800 - 800 = 400. तो ये गेट x1 माइनस x2.
x1 माइनस x2 आ रहा है 15, तो दिस इज 15 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 कितना था? 100। 15 स्क्वायर प्लस 100, द आंसर इज 325. So this question would definitely take 5 minutes, maybe more. And if you slight mistake, then you won't get your answer. That is why you have to attempt maths part free of mind. Give 90 minutes minimum and then freely answer the paper. So we applied centroid formula, then we formed quadratic, then quadratic का D method use किया, then find slope, then finding slope, quadratic का sum of root, product of root, and then distance formula. So many concepts. हाँ, इसीलिए एग्जाम के पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ताकि एग्जाम में पता लग जाए ऐसे करना है. दैट इज वाई मैथ्स इज बाय प्रैक्टिस. यू नीड टू सॉल्व लॉट मेनी क्वेश्चंस. सिमिलर क्वेश्चन आएगा, तुम कैन आंसर इट नाउ. सी बाय चांस अगर तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्म किया होता बाय रिप्लेसिंग वाई, अगर मैं वाई रिप्लेस करूंगा ना, तो वो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा और लंबा हो जाता है वो. तो यहाँ भी वी हैव टू मेक ए चॉइस इन विच टर्म यू वांट क्वाड्रेटिक, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ वाई. वाई का क्वाड्रेटिक छोटा है, एक्स का तो बहुत बड़ा होता है. So maths question on average take minimum 5 minutes, maximum 10 minutes. That is why maximum student get marks in negative. Some lucky one get marks zero, and some get marks in two digits. And a very few get 50, 60, 70, 80. बहुत मेहनत करनी होगी मैथ्स में. 100 का मैथ्स होता है, बट दैट मैथ्स वुड बी द डिसाइडर. चाहे जेई पेपर 1 हो, चाहे जेई पेपर 2 हो, मैथ्स इज द डिसाइडर. योर रैंक विल बी डिसाइड बाय मैथ्स. If the circle is this, then center is always minus g minus f. If we have a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, its center is this.
Center of a circle is minus g minus f. तीन अननोन होते हैं सर्कल में, यू नीड थ्री इक्वेशंस. सर्कल दो पॉइंट से पास कर रहा है और पैराबोला को टच कर रहा है 2,4 पे. टू मतलब 2,4 भी लाई करेगा उसके ऊपर, और दूसरा पॉइंट 0,1 भी लाई करेगा. तो यू कैन सब्स्टिट्यूट 2,4 एंड 0,1 इन द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. You'll get two equations. हम्म. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दे रखा है यहाँ पे. वर्टिकल पैराबोला है ये. वर्टिकल पैराबोला. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है वाई. वो हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी. दिस इज वाई. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है वाई. ये वर्टिकल पैराबोला है. 4a1 हो गया. दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई. तो ये 1 हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. So 0 comma 1 will satisfy the equation of the, will pass through the circle. So you can substitute x as 0, y as 1. Circle will become 0. This would be 2f plus c. So you get one equation, c equal to minus 2f minus 1. Then it is also uh, passing through 2 comma 4 circle. It will be 4 plus 16 plus 4g plus 8f plus c. 2, 4 also lies on the circle. अब पहली इक्वेशन से सी निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 20 प्लस 4g प्लस 8f प्लस सी की जगह -2f -1 = 0. तो 4g प्लस 6f equals to -19, right? So this is the equation. Now the question is, how would you get the third equation? Because we need minimum 3 equation to solve circle का question. Anyone? कैसे करोगे? हाँ तो no no no. Touch. Look at the word, touching the curve. That means they have a common tangent at this particular point. At 2 comma 4 they have a common tangent. Common tangent का मतलब क्या हुआ? If I find derivative, because differentiation gives you slope of the tangent, they have a common tangent at point 2 comma 4. So if I find dy by dx of the circle, and if I find dy by dx of the parabola, दोनों का slope same होगा, right? So if I differentiate parabola, if I differentiate the parabola, it is dy by dx is equal to 2x, right? But what is the point? Point is 2 comma 4, मतलब x हो गया 2. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे को पता लग गया 4 है. नाउ यू डिफरेंशिएट सर्कल, सब्स्टिट्यूट dy by dx as 4, x as 2, y as 4. ठीक है. उससे एक और रिलेशन आएगा g और f में. सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट इक्वेशन, यू गेट द सेंटर ऑफ द सर्कल. करो, सर्कल को डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट द सर्कल, substitute xy, substitute dy by dx, get a relation between g and f. dy by dx 4 आ गया ना. कॉमन टेंजेंट है ना. सो सिंस इज अ कॉमन टेंजेंट, दोनों पॉइंट पे स्लोप सेम आएगा. एज एट 2 comma 4 इट्स a common tangent, slope must be the same. सर्कल को डिफरेंशिएट करो. यू हैव डन डिफरेंशिएशन इन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, याद है ना.
So it's like implicit function, differentiating implicit function. So now two equations, two variables solve. So when you differentiate the circle, it is 2x, 2y dy by dx into g. No, 1 minute. 2x, 2y dy by dx plus 2g plus 2f dy by dx. C is a constant, so derivative of constant would be 0. X is 2, y is 4. X is 2, y is 4, dy by dx is also 4. So the equation is 2g plus 8f equal to minus 36. Are you getting this equation? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को माइनस करो तो f आ जाएगा. 2g प्लस 8f इक्वल टू माइनस 36. यही आ रहा है मेरा. सो मैंने 32 ले लिया था. प्लस 4 भी तो था. Now multiply this equation number 2 by 2, subtract from the first one, you get your answer. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन को 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो. तो 4g प्लस 16f इक्वल टू माइनस 72. 4g प्लस, सी इज नॉट नीडेड, यू वांट सेंटर ओनली. सिर्फ सेंटर चाहिए ना. तो 10f इज इक्वल टू कितना आ गया ये. 10f इक्वल टू माइनस 53. सो माइनस एफ आ गया 53/10. सो वी गेट द y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट इज 53/310, मतलब ए ऑप्शन रूल आउट हो गया. बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है. एफ को सब्स्टिट्यूट करो, जी निकालो. देखो. प्लेस एफ इन एनी ऑफ द इक्वेशन. इसमें डाल दो एफ को. तो 4g प्लस 6f माइनस, लो माइनस 19. देखो जी कितना आ रहा है.
तो 16/5 आ रहा है क्या? 16 बाय, हाँ, -16/5। नहीं, +16 आ रहा है मेरा। नहीं तो जी माइनस जी होगा ना फिर सेंटर। अच्छा, हाँ हाँ, ओके। G is 16/5. So minus G would be -16/5. Answer is C. So the concept was at a point of common tangent, slope will be the same. And you find the slope by differentiating the function, substituting the point. This chapter, coordinate geometry, is the most important chapter because there will be minimum 4 questions from this, 4 to 5 questions from this chapter. ठीक है, move to next question now. यहाँ पे मैं सर्कल की क्वेश्चन फाइंड करनी है, की पॉइंट्स आर टचिंग वाई एक्सिस. You can start again with the same way with the required circle with us. Find G, F, and C by using the given conditions. करो try. Use the given conditions. Find G, F, C. बनेगी. Think loudly. सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है. We have already done these condition. Touching y axis की कंडीशन में की हुई है. Yes, this circle, general circle touches y axis is a condition. देखो नोट्स देखो. कंडीशन फॉर अ जनरल सर्कल टू टच वाई एक्सिस क्या होती थी? आन्या पता है? अविका? एफ स्क्वायर इक्वल टू सी. Condition for a circle to touch y-axis would be
एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, टचिंग एक्स एक्सिस वुड बी जी स्क्वायर इक्वल टू सी। अप्लाई करो उस कंडीशंस को। अगर कोई सर्कल सेंट ओरिजिन से पास करता है सी इक्वल टू जीरो होता है, वो तो यहाँ खैर नहीं लगेगा, बट ये सारी कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए। हाँ हाँ, दो पॉइंट तो मैं मिल चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी सेटिस्फाई करो, सर्कल में डालो। द आइडिया इज टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय फाइंडिंग जी एफ एन सी। हाँ, उसके बाद देखोगे कि अब हम फोर ऑप्शंस कौन सा चेक करना है। यस, फर्स्ट यू फाइंड इक्वेशन टू द सर्कल बाय solving. Since circle is touching y-axis, condition for the circle to touch y-axis is f is square equal to c. Then it passes through minus 1 comma 0. So that will give you 1, 0, 2g plus c equal to 0. It also touches at 0 comma 2. That will give you the equation 0, 4, 0, 4f plus c. c equal to f square है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। So you get a quadratic here, which is a perfect square of f of plus 2 ka whole square. You get the value of f of, which is minus 2. The moment you get f minus 2, you get other values also. c की वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू आ गई, हो गया। So f is minus 2. That gives you c equal to 4. When you substitute c equal to 4 over here, you get the value of g minus 5 by 2. So you have g, you have f, you have c. देन सबसे इजी पॉइंट कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है, वो सब्स्टिट्यूट करके देख लो। जिसमें जीरो आ रहा है वो डाल दो पहले। यू कैन। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बात कर रहे हो। सबसे इजी पॉइंट टू चेक इज ए एंड डी बिकॉज दे हैव जीरो इन इट। सर्कल की क्वेश्चन इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, दैट इज माइनस 5x प्लस 2f माइनस 4y प्लस c इज 4। दिस इज अ सर्कल। अब इसमें देखो, जिस पॉइंट में जीरो आ रहा है ना, वो पहले सब्स्टिट्यूट करके देख लो। सबसे पहले यू कैन पुट दिस एंड दिस। तो हाँ। -1 0 में -2g लिखेंगे ना। 1 I- + 0 -2g। अच्छा अच्छा, तो माइनस 2g था, फिर ये हो जाएगा प्लस, +5/2 हो गया ना फिर तो। हाँ, x is -1, दिस वुड बी प्लस देन।
Which option satisfies? So D. Yes, D is the answer. डन हो गया सभी का? Read the question carefully, then decide what to do. Diagram बना लो. सी होगा इसे। नहीं, सी नहीं है. डायग्राम बन गया. जो गिवन सर्कल है उसका रेडियस 3 है एंड द सेंटर इज एट द ओरिजिन. The other circle passes through 0, 0 and 1, 0 and touches the circle also. डायग्राम बन गया.
The circle has center at the origin. It has radius 3. So one circle is like this. The other circle passes through this point and this point. This point is 3, 0. The only possibility is that the other circle has to touch this circle internally. एक्सटर्नल टच कैसे करेगा? ओरिजिन से पास करेगा और टच कैसे इंटरसेक्ट कर जाएगा फिर तो. सो दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी. दूसरी बात, किसी भी सर्कल की जो कॉर्ड होती है उसके मिड पॉइंट से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हमेशा वो सेंटर से पास करता है. Perpendicular at the midpoint of any chord to a circle always pass through center of the circle. One more thing, if there are two circles which are touching each other externally or internally at a point of common contact, if you draw a perpendicular वो दोनों सर्कल के सेंटर से पास करेगा. Perpendicular at the point of contact to the tangent will pass through the center of both the circles. कर लो इसको यूज. अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो दोनों सर्कल के सेंटर से पास करेगा वो परपेंडिकुलर. सपोज इस सर्कल 1 है, इसका सेंटर O1 है. इस सर्कल 2 है, इसका सेंटर O2 है. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड. अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो हमेशा वो मिड पॉइंट पे मीट करता है कॉर्ड के. वो भी यूज हो सकता है यहाँ पे. So this chord has point 0, 0 and 1, 0. So what is the midpoint of the chord? Midpoint of the chord would be 1 by 2 comma 0. If I draw a perpendicular, it'll pass to the center of this छोटा circle. That means छोटे circle का x coordinate कितना हो गया? 1 by 2. से the y coordinate is k. Center of circle का x coordinate half हो जाएगा. मतलब ये option ruled out हो गया. The x coordinate will be half. अब छोटा सर्कल एक तो टच कर रहा है उसको, दूसरे सेंटर से ही पास कर रहा है. दैट मीन्स दिस लाइन विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगी बिकॉज ओ सेंटर है और ये कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ये सेंटर से पास कर रहा है. तो इसका रेडियस कितना है बड़े सर्कल का? 3. दैट मीन्स दिस वुड बी 3/2. दिस वुड ऑल्सो बी 3/2. ये जो मैंने शेड किया है इसमें यू कैन अप्लाई पाइथागोरस एंड यू गेट योर आंसर फॉर के. This is k, this is 1/2, this is
3/2, हाफ ऑफ द रेडियस, उसका डायमीटर हो गया ना. सर्कल इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल. क्या बात कर रहे हो, अंधा ही बता देगा रेडियस 3 है इसका. मैथ्स रहेगा ना, तो भूल गए ना धीरे धीरे मैथ्स, और धीरे धीरे याद आएगा अब. So when you apply Pythagoras here, it would be 3/2 whole square is equal to 1/2 whole square plus k square. 9/4 minus 1/4 equal to k square. So 2 is equal to k square. K is equal to plus minus root 2. Half comma plus minus root 2 is the answer. D option. क्यों सर? सर Hmm? मैंने कंडीशंस नोट्स में कंडीशंस पे लिखा हुआ है ओरिजिन से पास हो रहा है, उसमें जी जी स्क्वायर टू एस स्क्वायर है, वो गलत लिखा हुआ है क्या? क्या? कंडीशन लिखी हुई है जी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर जब सर्कल ओरिजिन से पास होते हैं. नहीं, C equal to 0. ओके सर. फिर सर्कल उससे भी कर सकते हो, दूसरा मेथड भी कर लेते हैं. The second method is if I take the required circle as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. If a circle passes through origin, तो क्या होगा? C would be 0. It should satisfy 0, 0. And it also passes through 1, comma 0. 1, 0, 1, 0. So that gives you g equal to minus half. So minus g equal to half. So you get the x coordinate of the center minus half, 1/2. Then you can use the radius wala concept. Radius of circle is g square plus f square minus c. Radius is 3/2. So I know g is 1/2, so 1/4. F square निकालना है, c 0 है. हाँ, इससे भी वही आंसर आएगा. So whichever method you want to use, you get the same answer. So if circle passes through origin, C would be 0.
हाँ, 1691. The length of the chord whose midpoint is 1 comma 2 by 5 to the ellipse. Mm-hmm. Denominator of denominator of x square is greater is a horizontal ellipse. हाँ, एल आर उसे कोई मतलब ही नहीं है ना, एल आर तो फोकस से पास करता है. यू बिन गिवन midpoint of a chord. So if you remember, I told you a formula. Equation of the chord whose midpoint is been given is this: t is equal to s1. T is equal to s1 is the equation to the chord whose midpoint has been given. So the chord is this. इसका midpoint has been given. Midpoint is 1 comma 2 by 5. So you can find equation to the chord. Once you get the equation of chord, you can intersect this chord with the ellipse. You'll get the coordinates of A and B. Then you apply distance formula and get the answer. Again, a lot of calculations. Question is not tough. इलिप्स से इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? अरे टू लाइन की इक्वेशन में लाइन y निकाल के डाल दो एलिप्स में, क्वाड्रेटिक बन जाएगी. क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, लाइन से y निकाल लो या तो x निकाल लो, एलिप्स में डाल दो. अगर ये सर्कल होता तो बहुत इजी था हमारे लिए, बिकॉज सर्कल में हम पाइथागोरस से L/2 करके कर लेते हैं. बिकॉज इन सर्कल इफ यू ड्रॉ बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इट बाइसेक्ट द chord, but it's not a circle, it's ellipse. So first you get the equation of chord AB. AB की इक्वेशन निकालो using t is equal to s1. You know how to find t. Replacing x square by x1, replacing y square by y1. Do it yourself. किसमें? क्यों, कैसे करोगे? मिड पॉइंट थोड़ी पास कर रहा है एलिप्स से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ chord.
First, you find the equation of the chord. Equation to the chord when midpoint has been given is t is equal to s1. How do you get t? You get s by substituting the point in the equation of ellipse or any conic section. So if I substitute point is 1 comma 2 by 5. This is 2 comma 2 by 5 minus 1. ये तो कर रहे हैं 1000 बार हो चुका है क्लास में. You miss classes. Then फिर तो होना चाहिए तुम्हें. So this is the value of S1. When you substitute a point in a conic, you get the, ये negative आ रहा है, the point is inside. 19 by 20. हाँ तो वो तो S1 आएगा ना उससे. S1 थोड़ी बोला तुमने S1 है वो. And how do you get T? For T, you convert x square x1 by 25, y square y1, 2 by 5 by 16 minus 1. So this is your T. So x by 25, y by 40 minus 1 equal to S1. I'm using this now. S1 is minus 19 by 20. T is equal to S1 gives you equation to the chord whose midpoint is given. Check this out. Is it correct? Take LCM. LCM is 200. 8x 5y minus 200 equal to minus 19 by 20. So 8x plus 5y minus 200 is equal to minus 190. So 8x plus 5y minus 10 equal to 0. This is the equation to the chord. Now this chord is intersecting the ellipse at 2 points. So either you replace x or you replace y, form a quadratic, get the values of x and y. इसको एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है. So which, now let's solve the ellipse. Let's replace y. So what is y? Y is 10 minus 8x by, so that's how the question becomes lengthy. Simple calculation, only nothing else, is equal to 1. Form a quadratic, you'll get x1, x2. A और B के coordinates मिल जाएंगे. X coordinate. So this is x1, y1, this is x2, y2. Hmm?
So x square by 25. If I take 2 common, it'll become 4. So it'll be 4x square plus 5 minus 4x whole square minus 100 equal to 0. We need to find length of the chord. AB is x2 minus x1 whole square, y2 minus whole square. This is the length of the chord. This is a quadratic. Find the roots. Mira wanted to use middle split. कर लो. Twenty x square minus 40x minus 75 equal to 0. 4x square minus. So what are the roots? मिडिल स्प्लिट हो रहा है. मेरा मिडिल स्प्लिट हो पा रहा है क्या? Sir, I don't think so. तो फिर क्या करना मांगता है बोलो. The very annoying formula. ठीक है वही कर लो फिर. नहीं वो मत करो. What you do is use sum of roots and product of roots. Sum of root कितना हो जाएगा? Minus b by a, that is 2. Product of root कितना होगा? It'll be minus 15 by 4. So you can find x2 minus x1 whole square. Use this, the master blaster, which you don't like. वापस वही आ गया. So x1 plus x2 2 है, 4 हो जाएगा. And 4x1 x2 is minus 15. लोकल लो बात. This is 2 and this is minus 15. 19 आ रहा है ये. x2 minus x1 का होल स्क्वायर 19 आ गया. अब y कैसे निकालोगे? या तो लाइन में डाल दो. Now this ब्लन्ना नहीं नहीं कैसे करोगे? ये तो हाँ कर सकते हैं वैसे. If I substitute y1 it would be 10 8x1 by 5. y2 would be 10 minus 8x2 by 5. Am I right? तो इसको दोनों को माइनस कर दो. तो you'll get y1 minus y2 की वैल्यू. Since the point will satisfy the line as the ellipse as both, है ना? If I subtract these two, so y1 minus y2 would be how much? 8 by 5 x2 minus x1. I know what is x2 minus x1. 9, no, square I know 19 है. So this is 8 by 5 root 19. So x2 minus x1 whole square is 19 and y2 minus y1 is that. So 64 by 25 into 19.
सो 19 इंटू 25 प्लस 64 इंटू 19/5 ले लेते हैं, गुस्सा मत करो। अब पढ़ना शुरू किया इसने कल से। वो पहला मुझे मालूम है तुम्हारी पढ़ाई। वो तुम्हारे मार्क्स से पता लग रहा है, क्लास में रिस्पॉन्स मेरे को पता लग जाता है कौन कितना पढ़ रहा है। देखो वो पढ़ती है, दुबली हो गई पढ़ पढ़ के वो, इतना टेंशन में थी वो। अब इसका पता टेंशन कब तक हो, जब तक एग्जाम हो तब तो ये टेंशन में थी, इसके बाद बस फ्री हो जाती है। अगर कंटिन्यूस टेंशन हो तब जाके पढ़ाई होती है, नहीं? राइट, सो व्हाट इज द आंसर? 9 एंड 9 1 आना चाहिए। आई थिंक दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट। 19 इंटू 89 कितना आ रहा है? किया किसी सर ने? A-8। ए, ओके, ये। So this question wasn't like, I mean, not difficult, but वो एक ना calculation, so many calculations, distance formula, this, that. And if you answer this question in hurry, you'll definitely make some silly mistake and you won't get the answer. We'll say कि yes हो जाता है question. तो इसीलिए maths, when you start the maths paper, बिल्कुल free of mind होके you give minimum 90 minutes. 90 to 110 minutes in maths. Then you score 50 plus, 60 plus in maths.
क्वेश्चन पढ़ो और समझो क्या करना है इसमें। So whenever you come across a question involving locus, would mean something is changing, Over here, you can draw a number of tangent to the ellipse. If you have this is a horizontal ellipse, one tangent could be here, another tangent could be here, another could be this. There would be many tangents. So it says that we need to, so many tangents are there. So length of intercept between the coordinate axis will keep on shifting. Suppose the midpoint is this. Here the midpoint is this. Here the midpoint is this. So it'll keep on changing. So हमें उस मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब वो किस पाथ में मूव कर रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है. तो सपोज दिस इज द टेंजेंट. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1. x1 y1 lies on the ellipse. So x1 y1 would satisfy this. x1 square by 2, y1 square by 1 equal to 1, equation number 1. Now this is the tangent. इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? If a point lies on a conic, how do you find equation of tangent? Replacing x square by xx1. Replacing y square by y1. Minus 1 equal to 0. So this is the equation of tangent. इतना एक बार लिख लो. So this is the tangent. If a point lies on the conic, tangent is obtained by replacing x square by xx1, y square by y1, like that. And say the midpoint is somewhere here. Mid is h comma k of a and b.
Yeah. So h comma k is a midpoint of the chord. Tell me the coordinates of A and B. Find coordinates of A and B because this tangent is intersecting x-axis. So y coordinate will be 0. Here it is intersecting y-axis. Here x coordinate would be 0. Find x and y coordinate. कर लो. X and y coordinate आएंगे then use the midpoint का formula. तुम्हारा असाइनमेंट गिरा हुआ है क्या वो टेस्ट नीचे उठा लेना याद कर. So in the equation of tangent, if you substitute y is equal to 0, what is the x coordinate? 2 by x1. This is the x coordinate. If you substitute x equal to 0, what is the y coordinate? 1 by y1. We have to somehow get a relation between h and k only. Get a relation between h and k. Hmm? A और b के coordinates हैं. Coordinates of a and b. Now h, हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन में एक बार x को 0 डाला एक बार y को 0 डाल दिया. अब इससे मिड पॉइंट निकालो. फाइंड द मिड पॉइंट h कॉमा k इन टर्म्स ऑफ दिस यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. a और b का मिड पॉइंट है h कॉमा k. इसमें डाल दिया था नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये टेंजेंट की इक्वेशन. h कॉमा k इज द मिड पॉइंट. So midpoint would be 2 by x1 plus 0 divided by 2 equal to h. 0 plus 1 by y1 by 2 equal to k.
ऑडिबल नहीं है। You are not audible. So we found x1, y1 and substituted in the equation of LS because x1, y1 is satisfying this. Then I replace h and k by x and y. Answer is option A. For hyperbola, eccentricity is 1 plus b square by a square. Or can also remember this relation. Foci is hmm, इसमें कुछ this some I think some error. It should be either the center is not for this hyperbola center is not at the origin, that means, है ना? इसका center origin पे नहीं आएगा. So it should be either 1 plus plus minus 1 plus root 2. Some error. Because if I take foci as 1 plus root 2 comma 0, another as 1 minus root 2 comma 0, center will not be at the origin. So या तो I take this as it is and then I find the distance between the two. Distance between two foci is always 2AE. So you can find the distance between the foci. You get the value of 2AE. क्या आएगा distance? It will be 2 root 2. So AE in that case would be root 2. I know AE. I know eccentricity. Eccentricity is root 2. That gives you A is equal to 1. Then I can find B square also. A is root 2. A is 1. So B square is also 1. So when A and B both are equal to 1. Now what is LR? LR is 2B square by A. hmm? Hmm. Let me check.
हम्म, हाँ, A is the answer. Answer is A. So that means this was hyperbola whose center was not at the origin. So this is, that is why I've taken distance between two foci. Distance between foci, distance between foci is 2AE. Now let's talk how to go about for the studies now. You have October, November, and December, 3 months, because J would be happening in first, second week of January. 3 months minus 3 days. Today is 3rd October, 4th. 4th. 4 days are gone. And in between, you'll have your P boards also. So now you have to divide your time between the CBSE studies and the JEE. So far, you were giving 80% time to this, 20% to this. Now you have to reverse this. 20% to this and 80% to this. ये करना होगा. If you are really thinking about clearing JEE, 20% time CBSE को दो, JEE को 80% दो. That is every day 8 hours out of 12 hours of studies should go to JEE. Start revising the old chapters जो हमने शुरू में किए थे, complex, sequence, quadratic. Start revising them. After finishing these MCQs, I'll start with PNC, binomial probability. Then I'll move to matrices, determinants and vector 3D. ये कर लेंगे I'm sure. So booklet 1 of aptitude, you'll have those questions, previous year questions, PYQs. लेकिन उसमें से कई सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, ओल्ड सिलेबस. सो ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन यू हैव टू अवॉइड, उनको ओमिट कर देना, वो मत करना, वो नहीं आएंगे अब. प्लस जो बुकलेट्स में मिली हुई है मैथ्स की, फ्रॉम दोज बुकलेट्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज. As it is, I'm doing 70-80% of previous JEE questions. I did advanced question in the class. Remaining 30% बुक से कर सकते, बुकलेट्स में हैं सारे क्वेश्चंस. सो अब gear up and start studying. अगला टेस्ट कौन सा है मैथ्स का? हाँ, स्ट्रेट लाइन का ना, क्वाड्रेटिक. सॉरी, तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक भी नहीं किया अभी, ठीक है. लाइन के एमसीक्यूज नहीं हो रहे. क्या? स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज नहीं हो रहे. कौन से एमसीक्यू नहीं हो रहे? स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यूज नहीं हो रहे हैं मतलब क्लास में. स्ट्रेट लाइन का नहीं किया मैंने. नहीं सर, आपने कहा था कॉन्वेक्स स्ट्रेट लाइन के साथ होंगे. चलो ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन करा दूंगा इसके बाद. एमसीक्यूज है ना, वंस वी फिनिश दिस. ठीक है, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम.